All right. Now, the last part of our reflection on human relations approach. ठीक है, इससे पहले हम फर्स्ट जो इस पार्ट है असाइनमेंट 4 का, उसके बारे में we were learning about it, and so I started off with explaining to you who are the different influential authors in this approach who have contributed to this approach, and whose work led to this paradigm shift, along with other macroeconomic forces, which paved the way that the human relations movement became such a widely influential movement, uh, after the 1930s till almost the 1960s. ठीक है, तो इस जब आप पहला वाला हिस्सा है उसके अंदर आप डिफरेंट ऑथर्स के काम को प्लीज खुद से उनको थोड़ा सा रिव्यू कर लीजिएगा। उन ऑथर्स में आप डेफिनेटली यू शुड बी लुकिंग एट द वर्क ऑफ एल्टन म्यो, मतलब हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट्स, छोटा सा उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। फिर चेस्टर आई बर्नार्ड, डगलस मैग्रेगर, फ्रेडरिक हर्सबर्ग, अब्राहम मैस्लो, मैरी पार्कर फोले, Chris Argyris, Warren Bennis, and Renis Leiker. तो आपने इन because these are the influential authors, ठीक है, और इसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया कि each of them what were their key contributions, what were they really talking about, right? और हमने ये भी बात डिस्कस की कि ये इनकी जो थिंकिंग थी, it gave rise to a whole new concept of management science, which deviated from the existing paradigm based on the scientific management by Taylor, or the general administration by Fuel, or Max Weber's bureaucracy, which were theories basically which ascribed to a closed rational system. और जो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच है वो उसने क्योंकि ह्यूमन एलिमेंट लेके आई, तो फ्रॉम अ सिस्टम्स पर्सपेक्टिव it was the natural systems which were being suggested by these authors in the human relations approach. And what the effort was during this time was to engage more and more employees, so that they would willingly try to improve their output and productivity. And so that the willingness of the employee, it was critical. And employees working in teams, it was recognized that that was critical. Leadership was considered critical in this human relations approach. And therefore, it was considered as a different way of looking at things, a different way of looking at management, particularly in terms of the change in effectiveness criteria, right? So effectiveness criteria was also changing. अब मैंने जैसे आपसे ये कहा था कि फर्स्ट पार्ट को आंसर करते हुए आपने you know, other than in in this जो आपके पैराडाइम्स वाला आपका जो है टेबल, इसको आप यूटिलाइज करें, इसके अंदर से ये पहले दोनों उठाएं और इसको थोड़ा सा रीडू करें, रीथिंक करें, इसको एक्सप्लेन करें। इसी को बेशक आप यूज करें क्योंकि इसमें एग्जांपल्स लिखे हैं, इसके अंदर इसको थोड़ा ब्रॉडन करें इसके इसके कॉन्सेप्ट को, और इसको रिलेट करें क्वेश्चन के साथ जहाँ पे आपने ये प्रूव करना है कि दीज टू आर डिफरेंट, and in which I'm also asking you to base your argument on the theories of the influential writers जिनके नाम मैंने अभी आपके सामने लिए। तो हर चीज को आप साथ साथ उनके काम में से इसकी एग्जांपल्स इस इन दो फर्स्ट पार्ट्स के अंदर करें, और इससे इसमें ऐड करें हिस्टोरिक। फॉर एग्जांपल इसके अंदर आप जो है वो एक डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं हिस्टोरिकल लिंकेजेस की, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि इसकी हिस्टोरिकल लिंकेजेस भी डिफरेंट हैं। जो आपकी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है और आपका जो क्लासिकल सिस्टम है और क्लोज सिस्टम्स हैं, इसकी जो लिंकेज है दैट इज
क्लासिकल इकोनॉमिक्स, और इसकी जो लिंकेज है दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट? तो उसको आप जरूर ऐड करें, because that also adds to that whole idea that it's a complete paradigm shift, because उसकी basic linkages different है. फिर आप उसके अंदर definitely leadership styles को लेके आ सकते हैं. आप उसके अंदर communication जो है वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को लेके आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले वो फॉर्मल से वो इनफॉर्मल की तरफ जो है वो किया है, ठीक है? और उसके अलावा जो है ना वो आप उसके कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंसेस की डिस्क्रिप्शन बना सकते हैं, व्हिच आर मिसिंग हियर टोटली, और यहाँ पे उसको उसकी एक्सेप्टेंस है. इसी तरह आप इसके अंदर फ्रॉम अ सिस्टम्स अप्रोच, यहाँ जो चीज़ लिखी हुई है फ्रॉम अ सिस्टम्स अप्रोच, उसको भी आप एनालाइज कर सकते हैं. मेरे लास्ट लेक्चर का आखिरी पार्ट वही था. अच्छा जी, अब जो है ना वो क्वेश्चन के दूसरे हिस्से की तरफ आ जाएं, व्हिच आस्क्स यू बेसिकली टू एनालाइज कि ये जो अप्रोच है ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, अच्छा अगर हम इस बात को मान भी जाएं कि ये एक पैराडाइम शिफ्ट था, डेफिनेटली एक पैराडाइम शिफ्ट था और बहुत ही इन्फ्लुएंशियल शिफ्ट था, और बड़े अरसे तक इसका एक बहुत जो है वो होल्ड रहा है ऑन मैनेजमेंट थिंकिंग, दिस ह्यूमन रिलेशंस ओरिएंटेशन एंड माइंडसेट. उसका जो है वो it all the authors at that time were basically producing literature uh, which was reinforcing the same kind of ideas. So it took was it was it became, you can say, a movement on its own, ठीक है, movement on its own, and it became later, from today's perspective, we call that era the न्यो क्लासिकल राइटर्स, ठीक है? तो क्लासिकल तो वही आपके टेलर, फ्योल, आप वेबर हैं, और इनको अब हम न्यो क्लासिकल कह रहे हैं क्योंकि इट वाज सच अ मेजर पैराडाइम शिफ्ट. तो इनको जो है वो न्यो क्लासिकल राइटर्स कह सकते हैं. अब देखो, द वर्ड क्लासिकल इटसेल्फ, ये इट्स वेरी टेलिंग, इट्स अ वेरी it it's a very powerful word, and what it tries to tell you is that जो भी चीज क्लासिकल या न्यो क्लासिकल होती है, it will always remain important. Okay, it will always remain important, and some aspects of it will always remain useful and will influence the work which is going to be carried on in later years. So classical theories, neoclassical theories की ये तो एक बड़ी contribution है. But having said that, having recognized that human relations theories, they added into the management science literature a lot of insight about human behavior and the worker engagement. Having said that, all those insights and theories, second part of the question asks you to reflect whether they have also improved efficiency. राइट? अब हम ये कह रहे हैं कि ह्यूमन रिलेशन की जो theories है, no doubt that they gives a lot of insights, but would those insights be useful for improving efficiency? ना? अब देखो efficiency एक मैं बता रही हूँ, efficiency, effectiveness, ये दोनों ही मोस्ट इम्पोर्टेंट मैनेजमेंट के जो है ना वो ऑब्जेक्टिव्स हैं. ठीक है, जो मैनेजमेंट साइंस लिटरेचर है, it revolves around building efficiency and effectiveness. effectiveness जो है वो it is related to goal setting. ठीक है, और हमने देखा कि क्योंकि जब पैराडाइम शिफ्ट आता है तो उसके अंदर गोल सेटिंग भी चेंज होती है. ठीक है, अच्छा, जो आपका इनिशियल जो आप का जो क्लासिकल आपकी राइटर्स हैं, टेलर और फ्योल हैं, वो तो आपको यही कहेंगे कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस एक ही चीज है. यानी इफेक्टिवनेस गोल्स ही ऑर्गेनाइजेशंस के ये होने चाहिए दैट दे अचीव efficiency, which means that they are giving output at in a way which uses up all the resources in the most efficient manner by delivering the least possible costs. ठीक है ना? यानी कि highest possible productivity
at the least possible cost to the organization. Now, human relations approach says no. At the same time, effectiveness cannot be only considered as efficiency. Rather, it needs to be considered in terms of the uh, satisfaction of the employees and the engagement of the employees, and also the loyalty of the employees. Okay, these aspects are also important, because then they create that kind uh, of um, of effectiveness, which uh, really allows the organization to survive in the long run, to become more productive in the long run. अब ये देखें, जब आप इस सवाल के ऊपर रिफ्लेक्ट करें कि क्या ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, क्वेश्चन वर्ड एफिशिएंसी का यूज हुआ है. अब एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी एग्जैक्टली एक चीज नहीं है. के ह्यूमन रिलेशन के जो सारे थेरिस्ट है ना, और आप उनके थोड़े थोड़े काम को जब जो है वो समराइज करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि all of these theories, starting particularly from Elton Mayo, wanted to increase efficiency. ठीक है, इसी तरह बर्नार्ड भी जो है वो क्लियरली आपको बताएगा एफिशिएंसी कैसे इंप्रूव करनी है. इसी तरह मतलब किस किस्म के फंक्शंस जो है वो एग्जीक्यूटिव को ऑफर करने की एफिशिएंसी इंप्रूव हो. जो पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट जो है वो लाइकर्ट सजेस्ट कर रहा है, वो भी उसका ख्याल ये है कि इस किस्म की पार्टिसिपेशन से एफिशिएंसी बढ़ेगी. ठीक है, दैट इज व्हाट देयर गोल इज. सो मोस्ट ऑफ दीज ऑथर्स जो है वो आपको कहेंगे, मैरी पाकर फोले की आप चीजें पढ़ के देखें, उसका यही ख्याल है कि जब आप विन विन सिचुएशंस क्रिएट करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडर्स क्रिएट करेंगे, तो वो ना सिर्फ ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन उनकी जो प्रोडक्शन की कैपेसिटी है वो बढ़ेगी, और ऑटोमेटिकली जब वो कैपेसिटी बढ़ेगी तो एफिशिएंसी गेन्स होंगे. ये एक आप कह लें कि अंडरलाइंग अजम्पशन है जितने भी ऑथर्स हैं ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट उनकी. ठीक है, कि ये जो एंगेजमेंट है इसको बढ़ाने से एफिशिएंसी भी बढ़ेगी. ठीक है ना, तो एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका उन्होंने अपनी तरफ से डिस्कवर किया था, एल्टन मेयो ने डिस्कवर किया था कि जी एफिशिएंसी को बढ़ाने का तरीका ये हो सकता है कि जो उनका जो टीम वर्क है उसको यूटिलाइज करते हुए, उनकी जो टीम स्पिरिट है उसको यूटिलाइज करते हुए, और जो उनकी एक इंटरेस्ट इन वर्क इटसेल्फ है उसको यूटिलाइज करते हुए उनकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए. और उनकी उनकी जो मोटिवेशन है वो रिलेटेड होनी चाहिए, नॉट जस्ट विद व्हाट they are able to extract from the organization, but what they are able to give to the organization. Now this sounds really well, but to be honest, इसकी कोई proof जो है वो देना बहुत मुश्किल है. Okay, so to be able to prove that an organization actually will become more efficient by adopting these values of humanistic values, it's very difficult to say that. उसका रीजन ये है कि इन वैल्यूज को मेजर करना बहुत मुश्किल है. देखें, टाइम और मोशन स्टडीज जो टेलर ने मेजर की, उनको इट वाज वेरी इजी टू measure these things, right? इसी तरह जो आपका ब्यूरोक्रेसी है, वहां पे rules and regulations हैं which are written down, notified. इसी तरह फ्यूल जब बात करता है जो है वो स्ट्रक्चर्स की बात करता है, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द थिंग व्हिच ही इज टॉकिंग अबाउट, दो स्ट्रक्चर्स कैन बी विजुअलाइज्ड वेरी क्लियरली, राइट? बट जब आप बात करते हो ह्यूमन एंगेजमेंट की, तो उसको मेजर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. तो एक बात तो ये प्रूव करना कि ये जो ह्यूमन रिलेशंस की जो टेक्निक्स हैं उनको यूज करने से एफिशिएंसी बढ़ती है, इसको प्रूव करना बहुत मुश्किल काम है. और यूजुअली जो है वो हम जिस किस्म की टेक्निक से उसको प्रूव करते हैं, वो कोई हार्ड एंड फास्ट जो है वो उसके रूल्स नहीं होते. देखिए, जो एक चीज कही जा सकती है व्हेन आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज दैट you see most of these human relations theories will you know will suggest the measures. Now these are not principles, ये याद रखें, और ये भी एक major difference है, that the principles and the canons were suggested by these classical theories.
who said that this is the one best way. ह्यूमन रिलेशंस जो है वो आपको एक डिस्क्रिप्शन तो जरूर देती हैं, लेकिन उस किस्म की पिन पॉइंट करके रूल्स और प्रिंसिपल्स को अवॉइड करती है, वो दे ही नहीं सकते. सो वो दे आर इनएग्जैक्ट इन देयर वेरी नेचर, बिकॉज ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको 100% डिस्क्राइब करना तो एक इम्पॉसिबिलिटी है ना. इट कांट बी डन. It can't be done the way time can be measured. In the same way, human behavior cannot be measured. So therefore, to be totally sure that it increases efficiency, one, it is not possible. Number two, what we can say is that these measures or these guidelines which are suggested by the human relations theories, okay, they will increase workers' productivity. Okay, but productivity and efficiency is not exactly the same thing, which means it is possible that they will produce more. It is possible. It's not always necessary, which I'm going to discuss with you, other aspects. It is possible that they start producing more, but will they be producing more at the least possible cost? Will they be producing more in the least amount of time? Will they be producing more in a way which is suiting to the organization? That is not necessary. So productivity can increase, but this productivity will we cannot be 100% sure that it is if, it is happening at the least possible cost. और एफिशिएंसी के अंदर तो कॉस्ट जो है वो इंक्लूड करते हैं हम. ठीक है, प्रोडक्टिविटी इज हाउ इज द परफॉर्मेंस, and but the how of performance, which means okay, fine, you are performing, that is the outcome, performance. But in efficiency we say the performance at what cost, okay, at what time cost, at what cost of the you see monetary cost. उन चीजों को मेजर तो नहीं किया जा सकता इन द व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन सेटिस्फैक्शन एंड द ह्यूमन एबिलिटी. ठीक है, एंड द ह्यूमन एंगेजमेंट. एफिशिएंसी को 100% गारंटी नहीं किया जा सकता, प्रोडक्टिविटी को किया जा सकता है. एंड समटाइम्स higher productivity and efficiency can be the same thing, but not always, because efficiency also demands that the least amount of resources are used, or the resources are used to the best best possible advantage of the organization, not of the employee. यहाँ पे employee का benefit तो यकीनन guaranteed है ना. जब आप employee की एंगेजमेंट को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो एम्प्लॉय अपना बेनिफिट तो गारंटी करेगा, लेकिन क्या ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो बेनिफिट भी गारंटी होता है, इसके बारे में 100% नहीं कहा जा सकता. सो एफिशिएंसी इज नॉट अ गारंटीड आउटकम of the human relations movement. What is a guaranteed outcome is worker satisfaction, and usually worker satisfaction would lead to higher productivity. So productivity can also be linked with efficiency. So this kind of teamwork, this kind of motivation, it is good. It favors it favors the environment in the organization. Okay, it favors the culture of the organization. But does that culture also necessarily mean that it would be producing at lowest possible cost? That cannot be guaranteed, right? The fact of the matter is that if you look at efficiency, you are looking only in terms of the resource utilization, whereas you see human relations theories have broadened this concept to more value addition for the society on the whole and for the worker on the whole. So the only considering efficiency as the optimal effectiveness criteria, human relation theories never tried to gain that kind of efficiency, although they started off with that idea. But that kind of efficiency cannot be assumed, okay? Because the different things which I have discussed with you, that human behavior cannot be measured, it cannot be guaranteed to that extent that the efficiency can be claimed.
And this, the human relations theories never even try uh, to suggest that this kind of efficiency important. They try to broaden their the effectiveness criteria overall, right? So yes, improvement of efficiency was something which was desirable, but partially. It was not the only thing with which the human relation theorists were trying to target. So partially they were trying to target efficiency, which probably they could not achieve to the same extent as the classical school. And that is why the you see the forerunner of the human relations movement after this new classical paradigm shift, we will see that a kind of mix was made between the classicals and the neoclassicals, just in order to gain effectiveness and the engagement with the employees, as well as the efficiency. So for the purpose of only gaining efficiency, the human relations theories will not fulfill this purpose alone. Another thing why they will not fulfill this purpose would be the worker capacity. Particularly, I'm talking about in this question, I'm asking you to reflect on the enterprises working in the developing countries, where human resource itself, which means the worker capacity, it cannot be taken for granted. So workers who themselves who do not have the capacity to be able to guide the organization or to contribute to the organization, unless they are trained or programmed, definitely for them this the human relations approach, it would be a big limitation. If in those circumstances, you see, this is what McGregor talked about when he said that workers, the theory X and Y, and he talked about certain workers who are unable to cope with work, right? So they don't necessarily shirk work because they don't like to work. They also don't have the capacity to do that. और यूजुअली जब हम मैक्रेगर की थ्योरी को पढ़ते हैं तो हमारा ये ख्याल है कि वो सिर्फ जो है वो थेरी वाई, जिसके अंदर वो जो है वर्कर पार्टिसिपेशन को बहुत इम्पोर्टेंस देता है, थेरी वाई, वेयर पीपल अज्यूम चार्ज ऑफ देयर ओन वर्क, कि उसके ख्याल में वही बेस्ट है। उसने ये नहीं कहा, उसने कंपेयर किया और ये कहा है कि सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, एट टाइम्स थेरी एक्स कैन बी more effective, right? So developing countries may, if theory X is more effective, then certainly on them the control model, the bureaucratic model is more effective in these instances where the worker capacity itself cannot be guaranteed, right? तो ये चीज अच्छा। और दूसरा आप ये भी देखें कि जो आपकी लीगल पावर होती है, वो लीगल पावर या अथॉरिटी जो कि सजेस्ट की थी वेबर ने, तो उसको जो है वो मेरी पार्कर फोले ने इन दिस मूवमेंट, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट, उसने कहा कि नहीं, एक एक्सपर्ट पावर भी चीज होती है। अब ये जो एक्सपर्ट पावर है, इट कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड ऑलवेज। सो इफ द वर्कर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स in their jobs, right? And you find it difficult to find expert human resource, then this human relation paradigm or the human relation theories will certainly not give the kind of efficient results which they would like to. उसकी वजह से भी जो है ना वो efficiency curtail हो सकती है because of lack of worker capacity. Then another thing is the worker's self-interest. Okay, so you are trying to engage the worker, and you are thinking that when the worker and when they work in teams, they will definitely give their best. But and so their intrinsic motivation will be somehow unlocked. The kind of a kind of leadership will be provided which will unlock their capacities and their creative abilities. Now this again cannot be guaranteed. Sometimes self-interested behavior can lead the workers to to kind of
work in a way which is not in the favor of the organization and not efficient, because they are serving themselves rather than serving the organization. So this self-interested behavior of the worker can also hurt an organization if it is working totally along participatory lines, right? Exactly like democracy, or democratic means. What happens is that in these democracies, decision making is then delayed, right? So it's not just so self-interest of the worker, and then another point is delays in decision making. That is another problem, and definitely because you see, if you have a kind of a participatory system where you try to keep everybody on board, and you try the institution tries to create that kind of environment in which every individual is allowed to give their opinion, then bringing about a consensus in this opinion is time consuming. So decision making can be delayed, ठीक है? तो ये जो डिलेज है डिसीजन मेकिंग के अंदर, ये इनएफिशिएंसीज को कॉज कर सकते हैं, राइट? सो अब वेबर ने तो फॉर एग्जांपल कहा कि नहीं जी, क्लियर कट अथॉरिटी स्ट्रक्चर्स लाइंस होनी चाहिए, व्हिच मींस वन पर्सन इज गोइंग टू बी इन चार्ज and they're going to decide, and they're going to decide quickly. Now that may not be the best decision, but when lots of people try to take a decision, then it's a very time consuming process to build up the consensus, and that takes away from efficiency. So again, अब ये एक efficiency को रिड्यूस करने का ह्यूमन रिलेशंस का ये भी प्रॉब्लम बन सकता है. Workers are not only self-interested sometimes, which means they are working in a way which is going to benefit themselves more than the organization sometimes, and particularly when we are talking about workers with lower capacity, they may be making unreasonable demands. Okay, so every time the institution cannot bow down to the demands of the workers, particularly if they are talking about pay raises, or they are talking about benefits which they have not earned, and which are unreasonable. That is not going to improve the efficiency. In fact, वो तो productivity को भी घटाएगा. और productivity को घटाने के लिए एक और चीज जो which is very common in developing countries, is this political power struggles, right? So political power becomes more relevant than authority, and that then starts these infights and struggles within the various groups. We know that it within the various groups, and that then reduces the productivity rather than increasing the productivity. So the power struggles can also be initiated, particularly जब आपका जो culture है और जो developing countries हैं वहाँ पे इस किस्म का एक feudalistic culture होता है, एक fractionalistic एक fractionalism बड़ी एक problem है developing countries, and that is probably the reason why the developing countries remain like that, कि वहाँ पे जो institutional structures होते हैं वो weak होते हैं, और जो उनके अंदर groupings होती हैं वो ज्यादा powerful हो जाती हैं, और so self interest groups जो है वो क्रिएट हो जाते हैं, जिनको फिर हम माफियाज वगैरह भी कहते हैं, ठीक है? तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर और डेवलपिंग कंट्रीज की इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस किस्म के माफियाज भी कई दफा आ जाते हैं, और उनके साथ डील करने के लिए देन व्हाट यू नीड इज अ स्ट्रॉन्ग डिसाइसिव bureaucracy, I suppose, जहां पे rules and regulations are followed in letter and spirit, ठीक है? So that is another a problem which can arise. अच्छा, एक और चीज जो हम देखते हैं वो ये कि what अब देखिए बहुत सारे साल गुजर गए हैं, so a long time has passed since the human relations theories were influential. So we have experience of countries and of economies which were uh, which were adopting the socialist norms, ठीक है? Socialist norms जिसके अंदर ये कहा जाता है that the workers have all the power. So we know that these enterprises in these socialist or democratic countries were not necessarily the most productive, the most efficient. Now in the let's say USSR or other completely socialist countries,
So it really went to the extent that the productivity losses were so much that the whole macroeconomic system just destabilized. The reason being that when there was this lack of competition among workers, okay, and when they were not competing, and only the entire social goal was interpreted by few people, right? Then there was really no incentive to work. So ये जो monetary incentives होते हैं, जिसको के highlight किया था टेलर ने और underrate किया human relation theorists ne, these are also extremely important, right? So it's not that the human relation theorists did not talk about the monetary incentives. No, like if you look at Herzberg's theory, for example, he says hygiene, okay, and motivation, which means that they are certain important factors, जो rules हैं, and the conditions need to guarantee few basic you know, few basic rules and few basic environmental conditions need to be established first, only then the motivation takes place. But having said that, the monetary benefits uh, are not considered very powerful, whereas the experience in the socialist countries lets us know that monetary benefits can in fact be a very powerful motivator, maybe even more powerful than the intrinsic motivations which the human relations theories are, talking about. And similarly, you can talk about the, Scandinavian and European economies, like the Scandinavia की जो economies हैं, Norway, Sweden, Denmark, which are much more egalitarian, they are not necessarily more efficient. Now, there's one thing, उनकी societies में ये बात understand उन्होंने कर ली है कि उनको efficiency नहीं चाहिए. They really don't want to be the richest countries in the world. So, that is a totally new orientation. Question आपसे efficiency का पूछ रहे हैं. Were they the most efficient? No, they were not necessarily the most efficient. Were they the most or the richest or the fastest growing companies in Europe? No. In fact, European companies, to some extent, they were not so high growing, but later on they did. They were very egalitarian, which is a good thing, which from today's perspective we say is very important, maybe as important as efficiency. But the question asks you to focus on efficiency. So egalitarianism was adopted very effectively in Europe, but egalitarianism, which was the, you can say, the antithesis of efficiency, was not adopted so effectively in, for example, the Soviet Union, where the workers were at the same time unproductive and at the same time dissatisfied. So that is also a possibility. Okay, the workers are not efficient, they are not productive, and at the same time they are not satisfied either. But so you can say that overall, this this aspect of not totally ignoring efficiency, but being unable to guarantee efficiency is one of the biggest limitations of the human relations approach, due to which at a particular point in time, then again there was the thinking reverted back to including the classical or the control based approaches back again. So not you can say that this efficiency cannot be guaranteed. तो इन ये सारे पॉइंट्स जो हैं उनको आप डिफरेंट पैराग्राफ्स में पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखें, वे इस लेक्चर को दोबारा से सुने, इसके अंदर से पॉइंट्स निकालें और ये सेकंड पार्ट इसका आप अटेम्प्ट करें. ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे. इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह फिर हम ये देखेंगे कि ह्यूमन रिलेशंस जो थेरीज थी, they also ran their course of being influential in the 1960s, और उसके बाद then the contingency movement became more influential. अलबत्ता ये है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको
ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच में भी आपकी जो मोटिवेशन है उसको हम ज़रा थोड़ा-सा और ज़्यादा डिटेल के अंदर स्टडी करेंगे। अभी तो हमने ये अप्रोच को ओवरऑल हमने देखा और सारे इसके जो वेरियस इन्फ्लुएंशियल ऑथर्स थे उनके काम को देखा और इसकी इसकी बेसिक कंट्रीब्यूशंस और लिमिटेशंस को एक ज़रा इन डेप्थ देखा और एक मैच्योर तरीके से उनको समझने की कोशिश की। और अगली दफ़ा हम इसमें से भी जो मोटिवेशन का कंपोनेंट है उसको निकाल के और उसे डिटेल में स्टडी करेंगे। सो गुड लक अटेम्प्ट दिस असाइनमेंट नंबर 4। मैं आपको इसकी डेडलाइन जल्द ही प्रोवाइड करूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।